Hello everyone. Have a very great day. I think everything is fine at your end. I am Somaranjan Naik, Assistant Professor in Mechanical Department at Vedant Institute of Technology. Today we are going to discuss about the most interesting subject of mechanical engineering, that is automobile engineering. Before going to the chapter and content of the chapter and the subject in which we can able to be discuss very details, first of all you have to know about what do you mean by automobile. Automobiles is divided into two words, that is one is auto, another one is mobile. This two word combination is going to get automobile. Mobile means when anything, any system, any object, whatever may be, change the position from initial state to a final state. That is not a static position. It is always changing the position. The objective to build is that it changes the position from one point to another point. Auto means self-propelled. Self-propelled means no one can able to propel by means of any external agent. It can propel by means of its own self-arrangement and systems. By combination both things, that is automobiles means self-propelled mobilization of any system is known as automobile. The main introductions about this automobile is that any system in the carried out in the mechanical which consisting of a self-propelled vehicles used in the transportation system, goods, service and any other activities by means of a human being is known as automobile. इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ यहाँ है कि अगर एक व्हीकल रेस्ट में है या रखा गया है तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक मोबाइल है, उसका नाम कैसे दिया गया. मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब उसको बिल्ड किया गया उसका ऑब्जेक्टिव था कि एक जगह से दूसरी जगह को वो जाने के लिए ही बनाया गया है. रेस्ट में रखा गया है तो इसीलिए वो रेस्ट में है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो हमेशा रेस्ट में रहेगा. जब हम दो मेथड में किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, पहला मेथड ये है कि मैकेनिकल मेथड, जब हम किक मारते हैं तो किक मारने से क्रैंकशाफ्ट घूमता है, तो इसी हिसाब से ऑल द प्रोसेस उसके बाद होता है जो आगे पढ़ेंगे. तो पहला मेथड है कि हम मैकेनिकल वे में क्रैंकशाफ्ट को किक से घुमाते हैं. दूसरी मेथड है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्ट मारते हैं, जहां पे एक बेंडिंग स्प्रिंग मोटर्स होता है जो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है. तो दोनों में डिफरेंस इतना है कि मैकेनिकल में वी हैव टू गिव मैकेनिकल प्रेशर एंड फोर्स. इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम गिव्स द फोर्स टू इनिशिएट द स्टार्ट ऑफ ए व्हीकल. उसके बाद क्या होता है ना, गाड़ी अपने आप ही सब कुछ करता है, हमें सिर्फ उसको कंट्रोल करना है और उसके बाद सिर्फ उसको इंस्ट्रक्ट देना है बाय मींस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम. सो इसीलिए उसको ऑटोमोबाइल कहा जाता है. So in this subject we will going to study about this content of the chapter of the subject, that is history of automobile. ऑटोमोबाइल कहाँ से शुरुआत हुआ था, पहले कहाँ बनाया गया था, उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ. बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ दिए हैं, लेकिन जो भी सबसे एक्सेप्टेड है और उसके बाद सामने वाले के हिसाब से एक्सेप्टेड हुआ और उसे मार्केट में लॉन्च किया गया और हम उसे यूज किए, उसी हिसाब से मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बहुत सारी साइंटिस्ट है, बहुत सारी पैटेंट दिए थे, लेकिन मोस्टली एक्सेप्टेड पैटेंट एंड साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, इंजीनियर्स हम इसमें पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल में. उसके बाद जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमोबाइल मींस वहाँ पे एक जनरल एनालिसिस होगा कि सारे ऑटोमोबाइल में क्या क्या कॉमन कंपोनेंट्स है, उसकी फंक्शन क्या है. उसके बाद है ट्रांसमिशन सिस्टम. ट्रांसमिशन सिस्टम में दो सिस्टम आता है, एक गियर भी आता है, एक क्लच भी आता है. उसके अंदर गियर सिस्टम भी है और क्लच सिस्टम भी है. उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम है, गाड़ी को हम कैसे रोक सकते हैं, हाउ टू एबल टू स्टॉप द व्हीकल. आफ्टर दैट इग्निशन सिस्टम, इंजन के अंदर गाड़ी स्टार्ट कैसे होता है, इग्नाइट कैसे होता है, पेट्रोल कैसे कंबशन होता है, उसमें हम पढ़ेंगे इग्निशन सिस्टम. उसके बाद आता है सस्पेंशन सिस्टम. सस्पेंशन सिस्टम मीन्स गाड़ी के जो वाइब्रेशन है गाड़ी में जब गाड़ी चलता है, how a automobile can able to absorb the vibration when is running on the road, for that the rider should get any comfort for it. तो इसीलिए उसको सस्पेंशन सिस्टम में कैटेगरी किया गया, जो कि हम स्प्रिंग पढ़ेंगे उसमें. उसके बाद आता है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम. गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है तो उसको कूल कैसे किया जाता है,
उसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, इंजन को लुब्रिकेट कैसे किया जाता है, अदरवाइज फ्रिक्शन के कारण इंजन सीज हो जाता है, तो उसको ओवरकम कैसे किया जाता है, उसी चीज के ऊपर हम कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी गो फॉर फ्यूल सिस्टम, how the fuel is injected into the vehicle, how the fuel is get transmitted into the vehicle, how the fuel is used to get combustion in the vehicle, and how the fuel is used to get mobile to a vehicle. That means fuel कैसे vehicle में liquid form में जाके steam liquid form में जाके change हो जाता है उसका form, और उसी हिसाब से power stroke develop होता है. And finally जो सबसे interesting है at last, electric and hybrid vehicle, जो आज के generation आज के time पे सबसे demandable है और आज के प्रेजेंट टाइम में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल है, जो आने वाले कल पे सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होगा. तो फर्स्ट आज के क्लास में मैं सिर्फ हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट क्लास में मैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल को जाऊंगा. नेक्स्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल, फास्ट व्हीकल इन 18th century स्टार्टेड. फ्रेंच and German, the both country have many inventors under the background of the automobile. Maximum inventors of automobiles, they belongs to French and German. So in 18th century, the first vehicle in the 18th century, so steam vehicle first launched in the market. After that, in 19th century, combustion vehicle takes place, means gas combustion. It will run through the compressed gas. After that, in 20th century, gasoline means petrol, diesel vehicle came into the contact. After that, there is last electrical vehicle, 21st, the present scenario. This is just a skeleton structure of history of automobiles. So this is the best things behind the automobiles, behind the vehicles that we are going to get study. Actually, in first the engine is invented. After that, engine gets applied in the automobiles, then it takes to be a vehicle. For example, अगर लिथियम आयन बैटरी इन्वेंटेड किया गया तो वो बैटरी ही है, लेकिन उसके बाद अगर हमें उसे फोन में अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अप्लाई करते हैं, तब जाके एक नया इन्वेंशन होता है, लेकिन वो बैटरी सेम और सिमिलर होता है. उसी प्रकार बिफोर the lithium ion battery, no electrical equipment will be run in a very better way. The same way in the automobile, fast engine is invented. After the engine get invented, the next that engine apply in the vehicle, which turn to the automobile and revolution in it. In 1678, the Thomson, from the British inventor and engineer, first developed the steam engine, but that is not get accepted because the efficiency is very low. So after that, in 1764, all we know about it, James Watt steam engine, the most popular and accepted and high efficiency, comes into the point of scientific interest on the market. So in 1764, first steam engine is invented. That steam engine is get applied in 1769 by means a French inventor, Nicolas Joseph Cognet. Nicolas Joseph Cognet applied that steam engine in 1764 by James Watt in 1769 to build a fast working self-propelled vehicle. That is, in figure it is completely clear about it. This is a Cognet steam trolley, three wheel and fast steam engine vehicle come into the market. After that, Carl Benz, we are popularly known as the Mercedes-Benz, that is the generation of the Benz family. The Carl Benz is the first scientist who, the German engineer, after the steam engine vehicle three wheel is get invented, that is not get accepted in the future because you have very less efficient. Then the Carl Benz, a German engineer, designed a patent and the fast practice model and practical model in 1886, combustion engine and combustion vehicle. Is the combustion vehicle fast model. This is the fast model of combustion vehicle three wheel in 1886 by Carl Benz. So before that, I already said that in 18th century steam vehicle,
Then after 18th century steam vehicle, the combustion vehicle come into contact by Karl Benz. After that, the 20th century what happened. So in 1864, Nicholas Otto, and 1870 American scientist Brenton, the known commonly we already studied. Then the Nicholas Otto in 1876. First, they invented the first commercial successful gas engine in 1864. Then George Brenton, commercially liquid fuel propelled engines invented. Then 1876, Nicholas Otto and some friends of Nicholas Otto, that is Gottlieb Daimler, William Maybach, they 4-stroke engine come into the contact. So after that, it is get applied by Karl Benz. After that, that engine, combustion engines, which is invented by Nicholas Otto, is applied by Karl Benz to come into a new vehicle, combustion vehicle in 19th century. And this is a picture of the 4-wheel Karl Benz vehicle. That is a 3-wheel vehicle, it is a 4-wheel vehicle of Karl Benz. Next, in 1879, Karl Benz patented a 2-stroke gas engine, they come into contact. Then in 1892, Rudolf Diesel, the gasoline fuel, the gasoline fuel engine, combustion engine invented by Rudolf Diesel 1892 with compression ignitions and compressed charge engine. So this is a 2 vehicle which is a 20th century vehicle. 20th century vehicle come into on the market, accepted by the people as it is run by internal combustion engine of gasoline. This is the first vehicle, that is in 1933, Kittorius Rossilia is a company who built this vehicle. After that, Mercedes-Benz 260D, the first model of Mercedes, which is much more accepted by comparably Kittorius Rossi in the 1936. This is Mercedes-Benz 260D. Next, I already discussed about 18th century, 19th century, 18th century steam engine, 19th century combustion engine, 20th century Mercedes-Benz just before by means of gasoline engine, and finally there is an electrical vehicle. How it is invented? German engineer Andreas Flocken built the first real electrical car in 20th century. पहले बार इलेक्ट्रिकल कार को एंड्रेस फॉल्केन 20th सेंचुरी में डेवलप किए थे, और इसमें क्लियर कट ये फोटोग्राफी है, द ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक बुफालो लिखा गया है ये फोटो में। यहाँ पे यही उनका पहला गाड़ी था जो एंड्रेस फॉल्केन ने 20th सेंचुरी को डेवलप किए थे। लेकिन उसके बाद क्या होना, ये चीज़ ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। डिफरेंट टाइप ऑफ डिमेरिट कम्स इन द कॉन्टैक्ट, फॉर पर्पस ऑफ विच इट इज नॉट runs in the road very heavily and not get accepted by the people at that time. So after that, which is the most significant accepted electrical vehicle and modern vehicle is Tesla car. California electrical car maker Tesla Motors comes into the begin development 2004. 2004 the accepted pattern by means of Tesla Motors, and this is the Tesla Motor fast car, the Roadster. The name of this car is Roadster, electrical vehicle. The modern electrical vehicle come on the road first time in 2008. 2008 first Tesla bring the modern electrical car on the market, and this is the design of modern electrical car. The name of the car is Tesla Roadster. Finally, after that, the Japan company Mitsubishi and other company come into the market electrical car. But the first is Tesla. We all know about the CEO of the Tesla, Elon Musk, is always in the popularity. So it is a complete details about the history of automobile, how it started from 18th century to 21st century. In the next class, we will going to study about the general concept of automobile. So stay tuned, stay happy. Thank you.